स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने। Every October, Surat is ablaze with Navratra festivities. The 7-day festival sees a lot of celebration and people throughout the vibrant city of Surat. The daily festivities leave behind a shocking load of waste. But by morning, there's no sign of it. How do they manage to do so? The streets are squeaky clean thanks to a legion of workers who clean them while the city sleeps. They work at lightning speed, cleaning the roads and highways of the colorful city of Surat. These men work tirelessly to prevent the repeat of a 2-decade-old catastrophe. In 1994, Surat saw heavy flooding. Garbage from waterlogged drains and sewers washed up onto the streets of the city. A plague broke out, killing 50 people in its wake. Enormous business loss and a severely damaged reputation followed. The civic administration of Surat installed a completely new solid waste management system in the city. Today, Surat systematically collects 98% of the solid waste it generates for disposal. It is now working on scientific processing of this waste. तो जिस बार 1994 में जब यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन आ गई तो सबसे हमें जो ज़्यादा इफ़ेक्ट किया उसी चीज़ को, उसी गार्बेज के जो स्पॉट्स थे। जैसा पानी आ गया तो गार्बेज स्पॉट्स पे जितने भी कूड़ा कचरा वगैरह था तो पूरे शहर में एक तरीके से फैल गया, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हैवक हो गया था। और आफ्टर प्लेग हमको ज़्यादा उसमें से फिर हमने लर्न किया कि भाई इसको कैसे सिस्टम को सेटअप किया जाए कि अगली बार सूरत ऐसा है कि तापी नदी है हमारा और नॉर्मली ऐसा है कि 4-6 साल में एक बार तो फ्लड आना ही आना है, ऐसा हमारी एक सोच है। तो अगर इस तरीके से फ्लड आते रहे और इसी सिस्टम को अगर कुछ न किया गया तो फिर सिटी का हाल तो बेहाल होना ही होना है। तो वो एक लर्निंग था हमारे लिए और टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। As soon as the plague of 1994 was contained, the administration took steps to clean the city. The plan included sweeping all major and minor routes to achieve clean roads. It privatized collection of municipal solid waste, built infrastructure for its disposal, and launched a campaign against the use of plastic bags, which would often fly away and block drains. The city generates about 1,600 tons of waste daily. Most of this is collected and transferred to the disposal site at Khajur. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कोई ऐसा चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूरा सेटअप है वो जोन के अंदर रहता है। जोन के अंदर फिर उसको डिवाइड करके ये सफाई के लिए अलग से वार्ड्स बनवाए गए हैं, और जो वार्ड्स के अंदर जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सब सैनिटरी इंस्पेक्टर है और मुकादम है वो सुपरवाइजर स्टाफ, उसको जो पब्लिक रोड्स है उसका सफाई का भी
सुपरविज़न करना पड़ता है। और साथ साथ में ये सोसाइटियाँ जो अनुदान के लिए हमने पसंद किया है उसको भी वो सुपरविज़न करके उसमें अगर कहीं कमियां हैं तो वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को मिलके उसका सॉल्यूशन ला सकता है। The city has been divided into 7 zones and 100 sanitary wards. Door-to-door collection of waste started in 3 zones in April 2004 and was gradually extended to the remaining 4 zones. The corporation has now engaged 3 private agencies for the system. The agencies have collectively deployed 210 closed-body vehicles for door-to-door collection of waste, and the corporation incurs an annual expenditure of 24 crores on this exercise. All households enjoy this service where waste is collected from their doorstep every morning. Waste collectors go to every household collecting waste and then disposing it in the mini tippers. The waste is collected in closed-body vehicles and taken to transfer stations. Each truck is weighed and the records are maintained in their systems. The agencies are paid on the basis of the tonnage of the waste they collect. About 55% of the total waste is collected in this manner. हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरा कंप्यूटराइज है, उसका वे ब्रिज भी कंप्यूटराइज है। तो ये जो व्हीकल सुबह निकला तो सबसे पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन हमारे वार्ड ऑफिस में हो जाता है कि भाई ये व्हीकल निकल गया 7 बजे 6:30 बजे। फिर उसके बाद वो पूरा जाके वो VTS सिस्टम में तो रिकॉर्ड हो ही जाता है। और लेकिन जो अगर ये व्हीकल भर गया, उसका पूरा लोड हो गया, तो उसका अनलोड करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं वहाँ जो वे ब्रिज है वो भी कंप्यूटराइज हो गया है। तो वहाँ उसका ऑटोमेटिक वेट हो जाता है और हमारे पास को कंप्यूटर में रिकॉर्ड आ जाता है। सुबह 7 बजे से अभी तक हमारे यहाँ डोर टू डोर की करीब 18 गाड़ियों ने 35 फेरे किए हुए हैं। तो मेरे दोनों मैसेज आपको सही तरीके से मिल गए, बताइए। और आपके दोनों मैसेज मिल गए। ओके रोजर, थैंक यू। The city introduced sweeping at night in 1996 and now covers 200 major routes. Around 2,000 workers have been employed for this purpose. A fleet of workers clean the roads and flyovers of Surat every night so that the citizens wake up to a cleaner city. Hotels and restaurants are considered as bulk generators of solid waste. In the year 2000, SMC also instructed the Surat Hotel Owners Association to collect their waste and transport it to the transfer stations. At present, 300 hotels and restaurants have deployed 25 vehicles to collect waste each night and take it to the transfer stations. The city's landfill site is located at Khajur, about 15 kilometers southwest of Surat. For other waste, the corporation is setting up a mixed waste treatment plant capable of processing 2,300 tons per day. For segregated waste, a plant of the capacity of 510 tons per day is scheduled to come up by 2018. The city plans to holistically address its disposal needs by employing new technologies and setting up new plants. SMC is planning waste management in 3 different categories. First one, the generation part itself. From the household level, we collect a door-to-door garbage collection system and then carry to the transfer station, where we segregate further
and send it for the dump site, and from there actually the waste energy generation, fertilizer generation and liquid waste conversion model has been operated. The Surat municipality is also working systematically to create recycling centers based on specific materials such as electronics, construction and debris waste, plastics and biomedical discards. In a growing city like Surat, electronic waste is a new concern. The city is setting up an e-waste recycling plant to process the large amount of e-waste that the city produces. A construction and demolition waste recycling plant is also in the process of being set up. The municipal corporation has provided 13,000 square meters of land at Kosad to SGPPL for this plant. फिलहाल आज की कंडीशन ये है कि हमने 1000 टन पर डे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट मुंबई की एक एजेंसी है उसके साथ उसको अवॉर्ड करके दे के रखा है। उसका कंस्ट्रक्शन अभी साइट पे चल रहा है। प्लस 600 टन पर डे का प्लांट भी आ रहा है वेस्ट टू कंपोस्ट, वो दिसंबर में आपको कमीशनिंग स्टेज में मिल जाएगा। अभी रिसेंटली सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक पॉलिसी बनाई है, उसमें इस तरीके से किया है कि आपका सोसाइटी है या आपका प्रोजेक्ट है तो बिलो 5000 स्क्वायर मीटर है अगर आपका पूरा एरिया, तो वहाँ पे सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद अपने खर्चे से ऑर्गेनाइज वेस्ट कन्वर्टर आपको वहाँ देगी। आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन करा के देगी, आपको सिर्फ ऑपरेट करना है और उसमें से जो भी मैन्योर आएगा वो मैन्योर का जिम्मेदारी भी सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेगी। 1.5 रुपीज़, 1.5 रुपया जिसको बोलते हैं, उतना रुपया आपको दिया जाएगा आप अगर कॉर्पोरेशन को वो वेस्ट वापस करोगे तो, ऑर्गेनिक वेस्ट को यानी कंपोस्ट को। A plastic waste processing facility is under construction at Bhatar. Plastic waste collection centers have already been set up in several zones. Waste is segregated into different categories at these centers. Paper is compacted into squares and is sent to recyclers. All the other dry waste is stored in these facilities. The company has collected 548 kilograms of plastic waste so far. Another plant was set up in January 2003 for biomedical waste. The plant currently treats 4,000 kilograms of waste daily. The plant also has a water treatment unit that treats contaminated water. The clean water is again pumped into the processing unit for reuse. All streams of waste in Surat are either already being processed in dedicated plants or shall soon have processing units of their own. So here are the reasons for Surat's successful waste management system. A door-to-door collection system covering 98% of its households. It also has night sweeping exercises to prevent waste accumulation on street sides and drains. A biomedical waste plant treating large amounts of waste per day. This is not all. Also underway are a number of waste management plants at various stages of completion. A composting plant producing 400 tons of compost per day. A mixed waste treatment plant treating 2,300 tons of mixed waste per day. A segregated waste treatment plant capable of treating 510 tons per day. An e-waste recycling plant. A construction and demolition waste recycling plant and a plastic processing plant. It took an extreme event like the plague to shock Surat out of complacency. But the city took the challenge head-on. Through focused planning and effective implementation,
Surat has achieved most of the goals it had set up for itself. In the next few years, the city hopes to become a zero-waste city.